Jai Hind students, welcome to Radiance Academy. In this video, going to teach you how to draw the plan and elevation for a pyramid. Now, as you know, we are having the three kind of plans over here. One is for front, then there is side view, and then there is the top view. Firstly, roughly I'm going to tell you about this. From the front, what can you see? You can see just like a triangle whose base is 5 centimeter and height is also 5 centimeter. Height means this one. Front view and side view will be same for this 5 centimeter, and here also 5 centimeter is the height. Now what about the top view? If you see from the top, you can see the pyramid like this. You cannot see the sides, but you can see this one like this, like the diagonals of the square. Okay, now let's see how to draw this. As in my previous videos I told you, it is not necessary कि आप पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करो उसके बाद आप टॉप करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है. आप पहले टॉप व्यू भी ड्रॉ कर सकते हो. Now in this video, for this question I am going to draw the top view first. अभी टॉप व्यू में जो साइड्स हैं, this will be 5 centimeter, 5 centimeter, 5 and 5, as this is a squared one. So firstly draw a square of 5 centimeter. टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे होता है, सो दैट्स आई एम ड्राइंग दिस साइड, नॉट दिस साइड. ये देखिए 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल, बिकॉज स्क्वायर ड्रॉ करना है तो राइट एंगल हमको ड्रॉ करना ही पड़ेगा. दिस इज द वे to draw the right angle with the help of the compass. Now as this is a square, means all sides should be 5 centimeter itself. 5, 5, 5, 5. Now join this. Now here I am going to take one line, and as this is a right angle, so the same I am going to extend here. Extend means on this line I am going to put, and here also like this. I had marked here and here. As in the top view we can see these lines also just like the diagonals, so going to draw the diagonals also. This is the top view. Now draw one parallel to this line, means this will be the point, or you can see the midpoint of this. This is 5, so 2.5 is the. Now on this midpoint which we had taken, this is the midpoint of this also. Just draw the dotted line here. ओके. ना ये जो शेप है ये ट्रायंगुलर शेप में है और ये उसका हाइट है. बेस ऑलरेडी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये उसका हाइट है. अभी हाइट भी कितना है? हाइट भी है 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से मेजर करते हैं 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ऐसा हम लोग एक आर्क लगाते हैं. ठीक है. अब ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, दिस वर द बेस ऑफ द ट्रायंगल, तो इसके साथ में हम इसको ज्वाइन करते हैं. अभी
ये देखिए, ये हो गया आपके पास इसका, ये है फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, ये था आपके पास फ्रॉम अबव। नाउ साइड इज रिमेनिंग जनरली एज वी वर डूइंग। यहाँ पे रखिए, ओपन दिस मच एंड मेक वन आर्क लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे रखिए and make one arc like this. So this will be the base. Now this much, so that will be the half of that. Now this is the half, so here also in between half only, and from here you can join this and this also. Now on this we have to draw a right angle, लेकिन ये ऑलरेडी राइट एंगल था तो मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो वो राइट एंगल ही हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस वुड बी सेम। ये देखिए, यहाँ से यहाँ मैंने डॉटेड में ड्रॉ किया। हाइट देखिए, हाइट वाज 5, so this height will also be 5. Now we get it. These were the two points of the base of the triangle. So from here to here, and join this and this. This will be the elevation side. Hope you understood it. Kindly like, share and subscribe. Thank you.